The judgment is titled Curate Egg. Curate Egg is a terminology used in England in 1895, where you say some part is good and some part is bad. We look at climate change, why we are all here, can we protect the climate change, and how judiciary has evolved. Before that, when I went to study in the US for LLM environmental law, 95 we were told that there will be an issue of climate change. And today, after 28 years, it's quite worse and bad. The government did take action. I've explained how they did, but the courts were the one, by Justice Musuli Shah, first judgment Asghar Lagari, all over the world, acknowledged Pakistani judiciary everywhere, because two institutes were built on climate change. One is the London School of Economics Grant Research Institute on Climate Change, and second at the Columbia University, CBIN, where they are teaching Pakistani judges judgment on the issue of climate change. But usse pehle, climate change kya hai? Because of the fossil fuel we use, because of the trees we cut, because what we are doing to the earth, the temperature is rising 1.5 degree and 2 degree. But before that, how can we protect? I don't want to mention here the Western concept. ये बच्चे बोल रहे हैं, can you please quiet? I say Quran and Sunnah first. My preamble of the Constitution, इस मुल्क को कुछ नहीं हो सकता. The speech I gave in the Supreme Court 3 weeks ago, when I said good and good for my country, because my Ain, my Constitution, starts with the word of Allah. It says wherever the sovereignty of all this universe belongs to Almighty Allah alone and His sacred trust. And the Ain of this country has two most important articles. Nothing can go wrong. That's why judiciary is protecting your right to environment and your right to life. That is Article 4. It says it's inalienable right of every citizen to be treated as per law, and no action detrimental to the life will be taken on the property. Rafi Alam is arguing a case before me where I framed the issue that how we linking climate change with Pakistani citizen. Citizen is all linked with the word inalienable right of a property. Climate change protects my life. It threatens my life and my property too. The floods in Pakistan came because we did not stop climate change. We were cutting trees. मैंने परसों जजमेंट जो मरी पे दी है, मैंने अथॉरिटी बनवाई है, मैंने स्टार्ट किया कि जनवरी में केस आया था प्रोफेसर बासी का, एंड आई टोल्ड यू दैट टाइम द ट्रीज यू आर कटिंग, द ग्लेशियर्स इज मेल्टिंग. द ट्रीज वी हैव कट, द ग्लेशियर्स मेल्टेड, and because of global warming, the entire glacier melted, the entire floods came, and 1/3 Pakistan is under the flood. Justice Musuli Shah Sahab has already given a report on the Flood Commission 2010, where he went 6 months all over and gave the recommendation. First thing is, how can you protect this? Judiciary is not alone. We need you. Second, why I said I need you? Because Article 5 of the Ain cast an obligation on you to obey the law and obey the Constitution. Ain कहता है लेना और देना दोनों चीजें होती हैं. Inalienable right for you to be treated as per law, but on the other side, there will be a duty on you to obey the Constitution and the law of the country. Article 5 कहता है, it's inviolable obligation of every citizen. Inviolable, not to be broken. And inalienable, which is a right, which is the most important thing, you can be taken. But why do I link them together? Is with the Quran and Sunnah. When I was studying in the US, I wrote a paper and I learned one thing. This universe does not belong to me. It does not belong to you. The climate change is what we have done. We are now facing it. I went 3 months to Saudi Arabia, wrote a paper and says, Quran message, man is a trustee of God on this universe. We are just a chowkidar for the world. We are not the owner of the universe. Quran has various verses. Allah believes in that you have to given everything in proportion and measures, and you have to protect the resources
with the minimizing sustainable development. Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam आखिरी खुतबा for rights to the Kumbh in 1632 AD. Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam Charter of Medina, duties to the persons in 622 AD. Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam's khutbah is the who true. If you look at Article 9 of the Constitution, rights to life. Rights to life is a right to a healthy environment. And every citizen in Pakistan says, I represent, when we go abroad, people say, we are from, I said, I am from Punjab, Lahore High Court. Out of 224 million people, 110 million people are in Punjab. 36 districts today, 42 districts. We represent 2/3 of Pakistan. Our judgments will be applicable as under Article 189 and 201 to protect the Constitution and to protect the climate change. What is climate change? Again, इशू शुरू होता है, दुनिया ने बात की उसकी, हमने कैसे करना था? हमारा आर्टिकल 9 कहता है, आप पूछिए जज साहब ने कहा क्यों किया? अगर आइन कोई चीज़ नहीं करेगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे आइन की बड़ी खूबसूरती है जिसका नाम आर्टिकल 9 है, दैट सेज एवरी सिटीजन shall have a fundamental rights to life subject to law. Supreme Court of Pakistan in Shela Ziawabda, Rafi mentioned, has held and expanded the word life means rights to a life means rights to a healthy environment. It gives us a right. इस मुल्क के आइन में आर्टिकल 9 ने कहा हर शख्स का राइट है जीने का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीने का मतलब होता है एनवायरनमेंट फ्री, पोल्यूशन फ्री, एक लंबी जिंदगी जिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंडिजिट। PLD 1994 Supreme Court 693 Shalazia case, when it came, the word होता है इस मुल्क के 3 इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट, एग्जेक्टिव एंड पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन करती है किसी चीज़ को तो वो बाइंडिंग इफेक्ट होता है। उसको उर्दू में इसी बता रहा हूँ, लोगों को उर्दू की अच्छी लगती है। आइन कहता है कानून साजी क्या होती है। मैं क्लाइमेट चेंज में क्या बात करूँगा आपके साथ, 2 चीज़ें, कानून, आइन कानून और फैसले। आइन का आर्टिकल 70 कहता है पार्लियामेंट फेडरल और प्रोविंशियल कानून साजी कर सकती हैं आर्टिकल 70 के तहत, और आर्टिकल 89 कहता है गवर्नर और सदर भी कानून साजी कर सकते हैं ऑर्डिनेंस के तहत जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। इसको कहते हैं कानून साजी, रूल्स रेगुलेशन, जो क्लाइमेट चेंज पे बन गए हैं। दूसरी तरफ उससे बड़ी चीज होती है आर्टिकल 189, that every judgment of a Supreme Court of Pakistan, if it decides a question of law, enunciate the principles of law, shall underline be binding on all the courts below. That is the sovereign authority of the judgments of the Supreme Court, protecting climate change. Article 201, subject to Article 189, every judgment of a High Court shall be binding on the courts below. जो हम कर रहे हैं रोजाना। कानून साजी के 2 तरीके हो गए, 70, 89, 189, 201। अब बताएं कानून क्या है। कानून क्या है? सबसे पहले आर्टिकल 24, हर शख्स का राइट है 23 में, आई हैव अ राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। असगर लगारी केस में जैसे शाह मंसूरी शाह साहब ने क्या कहा, एक किसान कहते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज आएगा, फ्लड्स आएंगे, और अगर फ्लड्स आएंगे मेरी प्रॉपर्टी मुझसे छीनी जाएगी। आर्टिकल 24 कहता है, प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन आपको डिप्राइव से प्रॉपर्टी की। अब जब फ्लड्स आ गए, हमने दरख्त काट दिए, हमने कानून की खिलाफ वर्जी कर दी, तो जो शख्स बैठा है सिंध में, इन साउथ पंजाब में, वो कहता है मेरी तो प्रॉपर्टी गई, मेरे मवेशी गए, मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ। आइन ने मुझे कहा था राइट टू लाइफ, आई डोंट हैव अ लाइफ बिकॉज आई डोंट हैव लाइफ बिकॉज माई चीजन कैन टेकन अवे। राइट टू प्राइवेसी ऑफ होम, आर्टिकल 14, डिग्निटी। Article 14 says every person shall have rights to a privacy home and dignity and self-respect. That is gone. Floods have taken it away. Article 23, my right to property, gone. Whom shall I blame now? Shall I blame myself? Shall I blame the world? Shall I blame people who are cutting trees? Shall I blame people who are not implementing the Muslim Shah's flood report? What shall I do? I am a citizen of Pakistan. जज साहब ने अभी शुरू में कहा है आर्टिकल 4 सेज आई हैव अ राइट टू बी ट्रीटेड एज पर लॉ।
अगर Article 10A says my right to a fair trial is my right, who is responsible now? Our judiciary is playing its part. Is the executive? Yes, it is. Why didn't you implement the laws properly? We have signed so many treaties in the world of international law. We have to signatory to, Zafir just mentioned, good news again, that Pakistan has been chosen at COP27, which is Conference of Parties under the climate change. The Prime Minister of Pakistan is the Vice Chair of the party, sitting with the Norway Chief Prime Minister, with the President of the party at 6th November at Egypt, talking about action plan for Pakistan floods. Pakistan floods all over the world is now giving us money for climate change because the entire issue is what we are saying, climate change. दुनिया के टेम्परेचर क्यों उर्दू में समझा देता हूँ. फॉसिल फ्यूल, ऑयल, गैस, लैंडफिल, कार्बन मोनोऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाती है दुनिया में तो वो पूरा का पूरा जो लेयर है उसमें मुल्क का सारा निज़ाम ख़राब होता है. ट्रीज़ कट करते हैं, ट्रीज़ कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करता है, ओशन भी उसको इनहेल करता है. इन सबको जब ख़राब करोगे तो आपका फ़ायदा ये, जब ट्रीज़ काट दोगे, झूठ लिखते हैं 1%, 2%, no percent. I gave a judgment on forest. I said plant trees everywhere. Urban forest लेके हम तो कहते 4% forest नहीं रहा. We cut trees everywhere. हमने खुद अपनी गलतियां की है जिसका हम करेंगे. वही इस्लाम ने कहा है you are a trustee of this God on this universe. Public trust doctrine जो था वो ये कॉन्सेप्ट था. तो सबसे पहले ये आपकी बैकग्राउंड थी. अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर पे. पाकिस्तान आइन मैंने बता दिया. हेडिंग नंबर 2, कानून साजी क्या है. दुनिया, पाकिस्तान इज अ सिग्नेटरी टू वेरियस इंटरनेशनल लॉज. जब आप दुनिया के कवानीन में साइन कर देते हो तो आपको पार्टी बन के उस कानून को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. तो पाकिस्तान में सबसे पहले हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था 1997 का. उसमें कहा गया कि देयर विल बी एन EPA टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़. एंड सबसे बड़ी ट्रीटी थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज 1992. पाकिस्तान ने साइन की, कमिटमेंट की, पाकिस्तान वापस आया, उन्होंने कानून बनाया. फिर हमने साइन किया ग्लोबल पैक्ट फॉर द इन्वायरमेंट कि हम जी अपने 195 कंट्रीज ने कहा हम एक किस्म का वचन देते हैं, कमिटमेंट देते हैं कि हम जाके अपने फॉसिल फ्यूल को कम करेंगे, हम सोलर एनर्जी लेके आएंगे, हम दरख्त लगाएंगे, हम चीज़ें करेंगे. कमिटमेंट टू द वर्ल्ड है ग्लोबल पैक्ट. एंड ग्लोबल पैक्ट फॉर द इन्वायरमेंट इज अ कॉन्सेप्ट विच दे यूज एंड ग्लोबल एग्रीमेंट. सो पाकिस्तान इज अ सिग्नेटरी टू वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज. पाकिस्तान ने काम किया, उसने कवानीन बनाया. पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जिसको पाकिस्तान कहते थे, उसमें हमारे पास फिर फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, उसका भी काम है पॉलिसी बनाना. प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एनवायरमेंट का लॉ है, EPA काम कर रही है. उसका कॉन्सेप्ट है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज फ्रॉम अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्सेप्ट, but that concept is also Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam's Akhri Hadith on everything is given to you on proportion and measure. Sustainable development is to use something for future and for minimize your impact. This is called the concept. दुनिया कहती है ह्यूमन राइट्स हमारे हैं, मैं कहता नहीं इस्लाम के हैं. दुनिया कहती है हमने पीस किया, मैं कहता नहीं सुलह हुदैबिया इज अ ट्रीटी ऑफ पीस. दुनिया कहती है आर्बिट्रेशन की हम बात करते हैं, मैं कहता पहली आर्बिट्रेशन दुनिया में सालसी रूपा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के ब्लैक स्टोन पे की थी एज अ नोबल ट्रस्टेड पर्सन अपॉइंटेड बाय दी ऑल क्रैश रूबा. मैं हर हमेशा जाता हूँ वेस्ट पे, मैं कहता हूँ आप बात कर रहे हो वेस्ट की, मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम की. आप बात करते हो ह्यूमन राइट्स 1948 यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन, आप बात करते हो गांधी मूवमेंट स्टार्टेड कि जी आई एम अ बैरिस्टर कॉल्ड टू द बार, आई एम टू ट्रेवल फर्स्ट क्लास एंड न्यू योर ब्लैक, ही वाज थ्रोन अवे फ्रॉम द ट्रेन, ही सेड आई स्टार्ट मूवमेंट. आई सेड नो, यू स्टार्ट टॉक अबाउट पिटिशन ऑफ राइट्स, यू टॉक अबाउट मैग्ना कार्टा, बट आई से इस्लाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, राइट टू मूवमेंट, राइट टू स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी. दो चीज़ आप बात करोगे, लुक एट द प्रिंसिपल्स इंश्राइंड अंडर द इस्लामिक इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम. हम उससे बात करेंगे तो सब बात समझेंगे. वेस्ट की बात नहीं सुनता कोई. इस दुनिया को, इस अलमरा के साथ एक जगह थी, दुनिया में हम आए थे. द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 2 parts. First and last time, the Islamic states
were all seen together. They are never together in any way. All Islamic countries were in Lahore Summit 1974. First time, last time. Every state head came. लोगों से घर मांगे गए थे. आपका भी घर, सबसे घर लिए थे उस ज़माने में कि हमारे पास जगह नहीं ठहराने के लिए. Everybody committed here to make Islamic bomb, Islamic bank. ये कुछ बात होती है जब आप इकट्ठे बैठ के बात करते हो. लाहौर की बड़ी तारीख है. First time the world got together and they did it. World is getting together for every issue now. And the most important issue for the world is the climate change. पूरी दुनिया में मजाक बन गया. जहाँ पे बारिश पड़नी थी वहाँ नहीं पड़ रही, जहाँ पे पड़ती थी वहाँ ख़त्म होगी. हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ गया है. And you can see how the world is reacting to, because we are still using coal, oil, gas. We are cutting trees. We are burning plastic. We are using landfills. Methane and carbon dioxide is the biggest thing. हमारे पास दख्त नहीं रहे. हमने सब दख्त काट दिए. हम समझते हैं हमारा है. अभी मैंने मरी की जजमेंट में कहा है कि कोई शख्स दख्त नहीं काटेगा. और मैंने पहले जजमेंट दी थी आसिम फरूक की, और मेरे साथ ये भी कहा है, अब मैं एक और जजमेंट दे रहा हूँ कि अपने घर का दख्त भी नहीं आप काट सकते. प्राइवेट प्रॉपर्टी का दख्त भी आपका नहीं है. तो केस आ गया मेरे पास. मैं कहा मैं इसको स्टडी करूँगा. This is something we have to all look into. And the only thing we can look into is when you see Pakistan Climate Change Act 2017, कानून बनाया फेडरल गवर्नमेंट ने, उसमें प्रपोज किया हमने क्लाइमेट चेंज में बात करनी है. पाकिस्तान क्लाइमेट प्रोटेक्शन एक्ट, पाकिस्तान बायोडाइवर्सिटी रूल्स, ये बेशुमार कवानीन थे. बट इस तरह इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इस तरह वर्कशॉप्स नहीं कराए गए, इतनी चीज़ें नहीं की, एक्शन प्लान नहीं हुआ. तो फिर क्या हुआ? जुडिशरी ने आके इसमें कदम उठाया. सबसे पहले कब ऐसे हुआ? जो एग्जेक्टिव काम नहीं करती, कानून साजी पे अमल नहीं होता, तो फिर कोर्ट्स एक्टिव हो जाती है. इन द फर्स्ट केस केम फ्रॉम अगेन टेम्पल रोड. अब मैं जो बात करूँगा खब्बे सजे की करूँगा. पहले समिट कॉन्फ्रेंस में साथ हुई है. अब टेम्पल रोड पे एक खातून थी अंजुम इरफान. उसने कहा मैं कपड़े धो के रखती हूँ, मेरे कपड़े ब्लैक हो जाते हैं दोपहर तक, तो हम क्या करें? ग्लोबल ये सारा जो पोल्यूशन आ रही है, एयर पोल्यूशन, उसका घर था वहाँ पे. मैंने कहा जी वो मैं भी वकील था जब, तो सफ़ेद शर्ट पहनता था, शाम को आता था, सारी की सारी सफ़ेद शर्ट यहाँ से भी काली, सारा कॉलर भी काला. और टीवी में आप देखते हो सर्फ धुलती है. व्हाट इज़ हैपनिंग टू माई लंग्स? आई एम इनहेलिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर एंड ऑल. हु इज़ टू बी ब्लेम? लाहौर इज़ नाउ 8th और 9th, पहले 34th था, फिर 11th पे. राफे नोज is one of the worst polluted cities in the world. We do inhale this, and that includes the climate change impact of carbon monoxide. First time, Supreme Court of Pakistan, Justice Salim Akhtar, who gave Shaila Zia Wavda case, PLD 1994 Supreme Court, gave a judgment on air pollution, 1996 SCMR 1547, stopping the police, directing the police to stop the pollution of emitting from the cars. तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट 96 से इस चीज़ की सोच रहा था. बट ऑन द इशू ऑफ एयर एमिशन, और एयर एमिशन में सब कुछ आ जाता है कि इंसान को साफ हवा मिलनी चाहिए. क्यों? इट्स अ बर्थ राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू हैव क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर. रोटी कपड़ा मकान किस्मत से मिलता.